Hi everyone, welcome to my Python tutorial series. Today I am going to learn about OOPS. What is OOPS? OOPS is object-oriented programming. Is a programming style where we create objects from classes. Think of it like this: class is blueprint design. Object is real item made from that blueprint. Example is OOPS example. Of example class car object is object um, BMW BMW Audi Tesla. दिस इज क्लास यानी ऑब्स एग्जाम्पल क्लास में हम कार और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है BMW Audi एंड टेस्ला. दिस एग्जाम्पल इज ऑब्स एग्जाम्पल. कमेंट आउट. Next is what is class? A class is a template for creating object. Syntax. Class syntax. Class syntax. Class student. Next is class. This is class syntax. Here class is a keyword. Class is a keyword. A student is the class name. Student class name. And pass means the class is imperative for now. This is class example. This is class syntax. Next is class example. Creating an object. Creating an object. Class student. Class student. Pass. Next is S1 is equal to a student. Next is print S1. Output is main student object at 0. This is imperative क्योंकि मैंने क्लास नाम के स्टूडेंट नाम के क्लास बनाया, इसमें हम पास कर दिया, कोई वैल्यू नहीं, मैंने खाली imperative वैल्यू है. उसके बाद S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट प्रिंट S1 कर दिया, तो ऑब्जेक्ट एट कोई वैल्यू नहीं प्रिंट हुआ. Here S1 is an object of the student class. Another example. Class का another example. Another example. Another example. Class car. Next is pass. Next is car1 is equal to car. Next is car2 is equal to car.
So equal to car is capital. Next print car1 and print car2 car2. Output is main dot car object at this is 00 जो भी हो main next is main car object है 00 जो भी हो मतलब हमने कार नाम का क्लास बनाया जिसमें हम वैल्यू को पास किए उसके बाद car1 is equal to car2 is equal to car print car1 and car2 this is empty of class car. Each object has different memory address. एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल इसमें हम क्लास इज इक्वल टू मोबाइल नाम के हम क्लास बना रहे हैं जिसमें वैल्यू पास कर रहे हैं पास मीन्स इम्पैक्टी उसके बाद मोबाइल1 इज इक्वल टू मोबाइल नेक्स्ट इज मोबाइल2 इज इक्वल टू मोबाइल नेक्स्ट प्रिंट टाइप करते हैं प्रिंट टाइप मोबाइल1 अब हम प्रिंट करेंगे तो क्लास मेन मोबाइल प्रिंट होकर आया है यानी मोबाइल नाम के क्लास बनाए थे और हम वैल्यू को पास किए इम्पैक्टिव वैल्यू दिस इज इम्पैक्टिव m1 इज इक्वल टू मोबाइल m2 इज इक्वल टू मोबाइल प्रिंट टाइप हम m1 प्रिंट कराएं तो मोबाइल प्रिंट हो गया है कमेंट आउट दिस कोड एक की पॉइंट देख लेते हैं की पॉइंट oops is equal to object oriented programming. A class is a blueprint, an object is a instance of class. One class can create many objects. Next टॉपिक की ओर बढ़ते हैं init constructor and self. अभी तक हमने इम्पैक्टिव क्लास किया अब now let's learn how to give object their own data. What is init? Init is a special method called automatically whenever you create an object. It is used to initialize set of the object data. Syntax देख लेते हैं init syntax is class student उसके बाद dev init उसके बाद हम self उसके बाद print student object created
Next is S1 is equal to a student. Output is student object created. The message is printed automatically because init run when the object is created. क्लास नाम के स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए जिसमें हम डेफ इनिट प्रिंट के लिए सेल्फ का यूज किया, उसके बाद प्रिंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड प्रिंट किया, उसके बाद s1 is equal to student. This example is init example. What is self? Self refers to current object. It allows each object to store and access its own data. Example is storing data. Self storing data class. Example class equal to a student. Next is def double space init double space self and name. Self name. Next is self dot name is equal to name. Next is s1 is equal to a student Nitin. Next is print s1 dot name. Run this code and our output is Nitin. स्टूडेंट नाम के हम क्लास बनाए जिसमें हम डेफ इनिट सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद हम यहाँ सेल्फ डॉट नेम स्टूडेंट का नेम हम नितिन डाल दो, इसके बाद प्रिंट s1 डॉट नेम प्रिंट कर दी. दिस एग्जांपल इज सेल्फ स्टोरिंग डाटा एग्जांपल. Here name is a value passed while creating the object and the self name stores inside the object. Next example 2 multiple attribute multiple attributes. Example is class student. Next is def init self dot name age. This is multiple value. उसके बाद हम प्रिंट करेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज. नेक्स्ट s1 is equal to a student Nitin. So Nitin, इसके बाद 22 एज डाल देंगे, उसके बाद प्रिंट
s1 age s1 डॉट नेम करेंगे नेम उसके बाद प्रिंट s1 डॉट एज और रन करेंगे तो नेम एंड एज प्रिंट होकर आएगा नितिन एंड 20। हम स्टूडेंट नाम के क्लास बनाए जिसमें हम डेफ फंक्शन की ओर इनिट प्रिंट के लिए सेल्फ नेम एज सेल्फ नेम एंड एज सेल्फ नेम इज इक्वल टू नेम सेल्फ एज इज इक्वल टू एज स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू हम स्टूडेंट का नेम एंड एज को वैल्यू दिए उसके बाद प्रिंट s1 नेम एंड प्रिंट s1 एज। दिस एग्जांपल इज मल्टीपल एट्रीब्यूट एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट की तरफ। क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एग्जांपल। नेक्स्ट इज क्लास is equal to student, next is def init self dot name dot age, next is self dot name is equal to name, and next is self dot age equal to age, next s1 equal to student nitin and age is 20। उसके बाद नेक्स्ट s2 is equal to student Rahul नेक्स्ट इज 21। अभी से प्रिंट करेंगे प्रिंट s1 डॉट नेम s1 डॉट एज, इसके बाद प्रिंट s2 डॉट नेम कॉमा s2 डॉट एज। हम प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट ही नितिन 20 राहुल 21। स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया जिसमें हम डेफ इनिट सेल्फ नेम एंड एज सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। उसके बाद हम वैल्यू डाले स्टूडेंट 1 का नितिन एंड 21, स्टूडेंट 2 का राहुल एंड 21। उसके बाद प्रिंट 1 का प्रिंट s1 नेम नितिन एज उसका, और उसके बाद s2 का भी प्रिंट कर दिया। Each object has its own separated data. This example is creating multiple objects. की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट डबल स्लैश init double slash is the constructor. This is the constructor. This is the constructor. It's run automatically and object is created. Self refers to current object. Self is refers to current object. And self dot attribute. This is
Same dot attribute. This is attribute value to store data in object. नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमने सीखा कि वी लर्न हाउ टू स्टोर डाटा यूजिंग init and shell। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ let's learn how to create method function inside a class। तो what is an instance method? An instance method is a function defined inside a class. It works with the object's data। इंस्टेंस मेथड का सिंटेक्स इंस्टेंस मेथड का सिंटेक्स मेथड सिंटेक्स syntax is class student class student next is def। उसके बाद कंस्ट्रक्टर init कंस्ट्रक्टर shell dot name। उसके बाद नेक्स्ट shell dot name equal to name। shell dot name is equal to name। उसके बाद नेक्स्ट इज डेफ करेंगे सॉरी डेफ डेफ करेंगे डेफ डिस्प्ले सेल्फ नेक्स्ट इज प्रिंट student name self dot name उसके बाद हम वैल्यू डालेंगे s1 is equal to student Nitin। next is s1 dot display run this code and output is student name Nitin। स्टूडेंट नाम की हम क्लास बनाए जिसमें हम कंस्ट्रक्टर यूज करके सेल्फ नेम उसके बाद सेल्फ नेम डॉट इक्वल टू नेम उसके बाद डेफ डिस्प्ले सेल्फ प्रिंट स्टूडेंट नेम एंड सेल्फ नेम उसके बाद स्टूडेंट का नेम डाला उसके बाद प्रिंट करा। डिस्प्ले इज एन इंस्टेंस मेथड। डिस्प्ले इज ए दिस इज इंस्टेंस मेथड। सेल्फ डॉट name is access the current object data। This example is instance method। example या syntax
Next example, student detail. Student details. Student details example. Instance method. Instance method. Instance method. Example is class. Class is equal to a student. Next is def. Constructor init. Self name. Student age. Next is self dot name is equal to name self dot age is equal to age. Now def so self print name name self dot name self dot name. Next is print age 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 self dot age. इसके बाद s1 is equal to a student Nitin. इसके बाद 20. इसके बाद s1 dot show इसके बाद प्रिंट करेंगे name is Nitin and age is 20. This is instance method. पहले हम स्टूडेंट नाम की क्लास बनाए, इसमें हम डेफ फंक्शन कंस्ट्रक्टर यूज करके सेल्फ नेम एंड एज, उसके बाद सेल्फ नेम इज इक्वल टू नेम, उसके बाद सेल्फ एज इज इक्वल टू एज, उसके बाद फिर हम दोबारा इंस्टेंस मेथड लगा के सेल्फ प्रिंट नेम एंड सेल्फ नेम, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट एज सेल्फ एज, उसके बाद s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम नितिन एंड एज इज 20 वैल्यू पुट किए, उसके बाद s1 इज इक्वल टू शो दिस इज इंस्टेंस, उसके बाद आउटपुट आया नेम नितिन एंड एज 20. दिस एग्जांपल इज स्टूडेंट डिटेल्स एग्जांपल्स इंस्टेंस मेथड. नेक्स्ट एग्जांपल कैलकुलेटर क्लास एग्जांपल calculator class example is class calculator उसके बाद डेफ एड सेल ए कॉमा बी, उसके बाद प्रिंट सम
sum A, so A plus B, next is C is equal to calculator, and next C dot add is equal to 10 and 20. 10 and 20. Output is sum 30. आउटपुट इज सम 30। कैलकुलेटर नाम के क्लास बनाए जिसमें हम फंक्शन डेफ एड सेल ए एंड बी टीम सम ए प्लस बी किया। उसके बाद कैलकुलेटर सी इज इक्वल टू कैलकुलेटर सी डॉट एड इज इक्वल टू 10 and 20। आउटपुट इज सम 30। दिस एग्जांपल इज कैलकुलेटर क्लास एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल car class example. Next example car class example. Car class example. Example is class equal to car. Next is def init. This is constructor self dot brand। उसके बाद मॉडल, उसके बाद मॉडल next is self dot brand is equal to brand। next is self dot model, self dot model is equal to model। next is def details self is equal to print brand next self dot brand। उसके बाद प्रिंट मॉडल उसके बाद सेल डॉट मॉडल उसके बाद car1 is equal to car Toyota Fortuner next is car 1 dot details run this code and output is brand Toyota and model is Fortuner। कार नाम के क्लास बनाए जिसमें हम डेव फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज करके सेल्फ ब्रांड मॉडल, उसके बाद सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। उसके बाद हम फिर फंक्शन हम डिटेल्स का बनाए जिसमें हम प्रिंट कराएं ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड एंड मॉडल इज इक्वल टू सेल्फ मॉडल। उसके बाद हम कार1 में हम ब्रांड का नाम डाले टोयोटा एंड मॉडल हम फॉर्च्यूनर डाले। दिस इज
प्रिंट वैल्यू के लिए एंड कार्बन डॉट डिटेल्स प्रिंट हो गया. दिस एग्जाम्पल इज कार क्लास एग्जाम्पल. की मेथड देख लेते हैं. एक मेथड इज ए फंक्शन इनसाइड ए क्लास. द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ इंस्टेंस मेथड इज ऑलवेज सेल. यूज सेल टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स. कॉल ए मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट मेथड. दिस इज कॉल मेथड. नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनहेरिटेंस. Inheritance is one of the most important concepts in OOPS. What is inheritance? Inheritance allows one class to use the properties and methods to another class. जैसे parent class, base class. The class whose features are inherited. Child class, derived class. The class that inherits those features. Real life example: parent animal and child dog. A dog is an animal, so it can use the feature of the animal classes. एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं. इनहेरिटेंस का बेसिक एग्जाम्पल. इनहेरिटेंस एग्जाम्पल. Example is class is equal to animal. Next is def sound cell उसके बाद print animal make sound उसके बाद class dog animal next is pass उसके बाद d is equal to dog उसके बाद d dot sound run this code and output is animal make sound. एनिमल नाम के क्लास बनाए, इसमें हम फंक्शन के थ्रू साउंड और सेल प्रिंट एनिमल मेक साउंड वैसा जिसका साउंड होगा. उसके बाद हम क्लास बनाए इस डॉग नाम का जिसमें वो एनिमल है, उसमें हम पास कर दिए मतलब वैल्यू को नहीं डाले. उसके बाद डी डॉग एंड डी डॉग साउंड प्रिंट होके आया एनिमल मेक साउंड. Although dog does not have its own sound method, it inherits it from animal. Comment on this code. And next topic is next example. Example number 2, child class with its own method. Next example, child class with its own method. Example is example 2. Next is class
is equal to animal. Next is def eat sell. Next is print animal. Animal is eating. Next is class dog animal. Next is wave bark cell. Next is print dog is barking. Dog is barking. Next is equal to b is equal to dog d dot eat is equal to comma d dot bark to square. Run this code and output is animal is eating, dog is barking. एनिमल नाम के हम क्लास बनाए जिसमें हम पेरेंट क्लास है दिस डे फीट सेल। उसके बाद प्रिंट एनिमल इज ईटिंग क्या खाएगा। इसके बाद क्लास डॉग नाम के हम चाइल्ड नाम के हम फिर क्लास बनाए जिसमें बार्क मतलब उसका साउंड प्रिंट डॉग इज बार्किंग। उसके बाद डी डॉट डॉग डी डॉट ईट एंड डी डॉट बार्क। Output is print is eating and dog is barking. This is child class with on method example. The dog object can use both the inherited method eat and its on method bark. Next example की ओर पढ़ते हैं inheriting attributes method example. Inheriting inheriting attributes example the class is equal to person is equal to class person. Next is def constructor init same dot name. Next is save dot name is equal to name. Next is class student person. Next is def so cell print name cell dot name
उसके बाद एस इज इक्वल टू स्टूडेंट मीटिंग student s dot o हम इसे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट इज नेम इज नितिन। इसमें हम पर्सन नाम के क्लास बनाए जो पेरेंट क्लास है। दिस इज डेफ इनिट कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेफ नेम, उसके बाद सेल डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। उसके बाद हम चाइल्ड क्लास बनाए जिसमें स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट पर्सन डेफ सो सेल्फ। उसके बाद प्रिंट हम नेम सेल्फ नेम किया, उसके बाद स्टूडेंट का नेम डाले, उसके बाद एस डॉट शो इनहेरिटिंग output is name Nitin. Comment out this code. The student class inherits the name attribute from the person class. Next is using super method. Super is used to call the parent class constructor. Next example is super using super class person. Next is def init self name उसके बाद सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। नेक्स्ट इज क्लास स्टूडेंट पर्सन next is there init self name age। next is super dot init name super dot init name super dot init name में हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे नेम। उसके बाद सेल्फ डॉट एज is equal to age। उसके बाद फिर def so self next is print self dot name self dot age। next is s is equal to student Nitin (20). next is equal to s dot so run this code and output is Nitin 20। हम पर्सन नाम के क्लास बनाए जो पेरेंट क्लास है। उसके बाद डेफ इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज करके सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। उसके बाद हम चाइल्ड क्लास बनाए जिसमें स्टूडेंट क्लास के नाम से है, जिसमें हम पिन कंस्ट्रक्टर का यूज करके सेल्फ नेम एंड एज
उसके बाद हमने यहाँ पे सुपर की का इस्तेमाल किया, सुपर इनिट सेल्फ के जगह पे सुपर, दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड नेम। उसके बाद सेल डॉट एज इज इक्वल टू एज, उसके बाद डेफ शो सेल, उसके बाद प्रिंट सेफ नेम एंड सेफ एज किए। उसके बाद हम वैल्यू डाले S1 में, नेम नितिन एंड एज 20। उसके बाद एस डॉट शो, कॉल दिस फंक्शन, दिस इज आउटपुट इज नितिन 20। This example is using super example। नेक्स्ट की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट में कहता है इनहेरिटेंस, लेट्स वन क्लास रीयूज अनदर क्लास कोड। चाइल्ड क्लास inherit method and attributes from parent class. Super is to call the parent class constructor. Super is call the parent class constructor. Inheritance reduce code duplicate and make program easier to maintain। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड overriding। Now let's how to child class change method intent from its parents। What is method overriding? Method overriding means a child class defines a method with the same name as the parent class when called the child's version is used। अब हम मेथड क्लास का एक एग्जांपल से समझते हैं। मेथड overriding example is class animal, next is def sound cell, next is print animal makes a sound, next is class dog animal, next is def sound cell, next is print dog box, next is d is equal to dog, and next is d dot sound, output is dog box, even though animals has a sound method, the dog class override it। This example is method overriding example। Next example number 2, class bot def I cell, next is print ball can fly
नेक्स्ट इज क्लास पेंगुइन बर्ड नेक्स्ट इज डेव फ्लाई सेल नेक्स्ट इज प्लेन penguin cannot fly. Next is P is equal to penguin or next is equal to P dot fly. Run this code and output is penguin cannot fly. क्लास बर्ड नाम के क्लास बनाया जिसमें हम डेव फ्लाई डॉट सेल फंक्शन का यूज करके अगर बर्ड उड़ता है तो प्रिंट कैन फ्लाई और उसके बाद हम क्लास पेंगुइन जो बर्ड है उसके बाद हम डेव फंक्शन फ्लाई डॉट सेल उसके बाद प्रिंट पेंगुइन कैन नॉट बी फ्लाई फिर डॉट पेंगुइन एंड पी डॉट फ्लाई. This example is overriding example. Next topic is calling the parent method with super. You can call the parent class method inside the child class. Next topic is calling the parent method. Calling the parent method with super. Example is class animal dev sound save. Next is bring animal makes a sound. Next is class dog animal next is dev sound cell. Next is super dot sound next is bring dog barks. Next is dog next is d dot sound output is animal makes a sound and dog barks. एनिमल नाम के क्लास बनाया जिसमें हम साउंड फंक्शन साउंड से प्रिंट एनिमल मेक ए साउंड उसके बाद क्लास पेरेंट चाइल्ड नाम की क्लास बनाया जिसमें हम डॉग एनिमल डाला उसके बाद डेव साउंड
इसके बाद सुपर के इस्तेमाल करके साउंड प्रिंट डॉग एंड बार्स डी डॉग, इसके बाद डी इज इक्वल टू डॉग डी डॉट साउंड, आउटपुट इज एनिमल मेक ए साउंड एंड dog barks. This example is calling the parent method with super example. Next topic की ओर बढ़ते हैं. What is polymorphism? Polymorphism means many forms. The same method name behaves differently depending on the object. Next example is polymorphism. Polymorphism. Polymorphism example. Class is equal to dog. Next is Dave. Sound. Sale. Next is print. Bark. Next is class. Cat. Next is class cat. इसके बाद Dave sound. Sale. Next is print. Meow. Meow. Next is animal. Animals is equal to dog. इसके बाद cat. इसके बाद और animal. Animals. Next is animal dot sound. Animal dot sound. Run this code and output is bark and meow. Both class have a sound method but each produce different output. This example is polymorphism example. Comment of this code. Next topic start. This is last topic. Oops. Encapsulation, access, modifiers and abstraction. This is the final part of core OOPS concept. Encapsulation means wrapping data, variable and methods function into a single class and controlling access to the data. Example is encapsulation example. Encapsulation example. Example is class student their init self name marks self dot name equal to name self dot marks equal to marks. Next is def display
self next is print self dot name self dot marks. Next is equal to student anything '95 s dot display run this code. Error type error student text no arguments में मैंने एक छोड़ दिया और से रन करते हैं Nitin 95. This example is encapsulation example. Comment out this code. Next topic is access modifiers. Python has three types of access modifiers. First is public members. Public members can be accessed from anywhere. Access modifiers. Access modifiers and public member members code is class student next is there init cell next is cell dot name is equal to nothing. Next is this is equal to student next equal to print is dot name is dot name. Run this code and output is nothing. And this is public member example. Comment of this code. Next is protected member. Protected members start with a single underscore. Example is next example protected members. Example is class student next is there init cell dot marks or cell dot underscore marks is equal to 90 7 s dot student
उसके बाद प्रिंट रेस डॉट मार्क्स although you can access marks, it is meant to internalize by convention. This is internal name convention. This example is protected member example. Next is private members. Private members start with a double underscore. Private members example is private members example class is equal to student next is def init self next is self dot password is equal to ABC 1 2 3. This is private password. Next is def so password self. Next is print self dot double underscore password. Next is s is equal to student. Next is equal to s dot so password. Run this code and output is ABC 1 2 3. This is the private member example. अंडरस्कोर मीन्स प्राइवेट मेंबर्स एग्जाम्पल, मतलब हम प्राइवेट इस चीज को कर सकते हैं डबल अंडरस्कोर लगाकर. नेक्स्ट टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग ओनली द इनिशियल फीचर एंड हाइडिंग the implementation details. Python provides this using the ABC module. From ABC import ABC stack method. Example is abstraction. Example. Example is class equal to animal equal to name. Class is equal to animal ABC. Next is इसे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ABC import ABC abstraction method
Abstraction method. Abstract method. Abstract method. Next is like the rate. Abstract method. So next def sound save. Next is pass. उसके बाद class dog animal next is def sound save next is print drop bars last one dog next is d dot sound. Run this code and output is dog barks. If a child class does not implement the abstract method, Python will raise an error when you try to create its objects. Ops topic is complete. Configuration. We have successfully completed the Python course. Thank you so much for being a part of this learning journey. I hope you enjoy very lesson and learn something valuable. If this series helped you, please like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. For more programming tutorials, keep coding, keep improving, and I will all see you in the next exciting series. Thank you and happy coding. Thank you so much.